Okay, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, brothers and sisters. We are again online, and today's topic is Al Mufradu wal Muthanna wal Jam'u. I also gave you introduction that in Arabic, in English, the noun number is of two types, singular and plural. Like say, for example, boy and boys. More than one is plural, and in Arabic it is otherwise. The if a noun that represents one person or place or thing, that is known as al mufradu, and for two means any noun that is to represent two persons, two places, or two things. That means for that we have got a separate word, that is al muthanna, right? And for more than two there is plural, that is wal jamu. So in Arabic, if a noun that represents one person, place, or thing, that is known as mufradu, and a noun that represents two, it is known as muthanna, and more than two, that is jamu. Then again we'll be having different types of jama as well. We'll learn one by one. So until now, we'll first start with mufrad, and you have been dealing with mufrad until now, and you learned many things about mufrad. Like say, for example, there's one person, rajulun, that is mufrad. There's a door like babun. There is a bayt, means any home, baitun, any room, ghurfatun, any chair, kursiyun, okay, any bed, sarirun. So all these nouns, they convey the sense of one thing, means that gives the meaning of one person, place, or thing. So that is what mufradu. Now over here we have to learn about mufrad as well as their i'rab. You know the i'rab. We learned about i'rab yesterday. There are three types of i'rab: rafun, nasbun, and jarrun. And I will let you know what is the alamat or identification of these Arab. Means repeat that again today. So let's start with Mufrad, and then I'll come back to let our brothers and sisters know in Urdu. So Mufrad means that indicates or demonstrates one thing, like qalamun, this demonstrating or indicating one column. Kitabun, one book or any book. Baytun, any one home or any home, right? Now, what is the Arab of mufrad, and how many Arabs of mufrad can be? Like qalamun, qalaman, and qalamin. Kitabun, kitaban, and kitabin. Three Arab. Baytun, baytan, and baytin. Right? These are the three Arab. Now, like if there are zammatain or zamma, you know that is marfu. Al marfu wa alamatuhu. What is zamma or zammatain? Means al mufradu, any singular noun that will become marfu, the status of that noun will be raf'un, either it has zammatain or zamma. And if we talk about mansub, like say for example, qalaman, kitaban, baitan, it's very clear that noun now it is having the nasbi status, nasab, and it is mansub, and the alamat of mansub is either fatha or fathatain. The same is case with the, means the same note, means with, when we talk about, just a minute, let me save this, then coming back. Okay, so when we talk about qalamin, kitabin, baitin. Now that is what majroor. There is jar. And why majroor? Because the alamat of jar is kasra or kasratain. So mufrad, I repeat,
is a noun that indicates one person, place, or thing, and that has three i'rab, or rafun, nasbun, and jarrun. And we learned in detail about i'rab yesterday. We also did exercise. So मेरे भाई और बहनों, जब हम बात करते हैं इस्म की, तो यहाँ पर इस्म की तीन, हम दोबारा एक किस्म पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं कि इस्म तीन तरह का होता है। एक होता है जिसको एक पे दलालत करे, इसको मुफरद कहा जाता है, और अगर दो पे दलालत करे, यानी दो लोगों, दो बंदों, दो जगहों की मीनिंग बताए, तो उसको मुसन्ना कहते हैं, और दो से ज्यादा पर दलालत करे तो उसको जमा कहा जाता है। इंग्लिश में, उर्दू में क्या होता है, वाहिद या जमा, मगर अरबी में मुसन्ना होता है, जिसको तस्निया भी कहा जाता है, यानी कि ऐसा लफ्ज, ऐसा नाउन जो दो चीजें इंडिकेट करे, दो के बारे में बताए, दो नाउन हो, दो पर्सन हो, दो प्लेसेस हो, दो चीजें हो। तो हम अब इनका एराब कल की क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। जैसे आपको पता है कि जो मुफरद होता है, जैसे कलमुन है, ये मुफरद है, किताबुन मुफरद है, बैतुन मुफरद है, इसकी तीन यानी कि स्टेटस हो सकते हैं, यानी ये जो है इनके एराब तीन हो सकते हैं। जैसे कलमुन हो सकता है, कलमन हो सकता है, कलमिन हो सकता है। इसी तरह किताबुन, किताबन, किताबिन हो सकता है, बैतुन, बैतन और बैतिन हो सकता है। तो आपको पता है कि जब रफ़ई हालत होगी, मरफू होगा, तो या तो जम्मा होगा या जम्मतैन, जब मंसूब होगा तो या फतह होगा या फतहतैन, और जब मजरूर होगा तो उस पे या कसरा होगा या अल मुसन्ना। मुसन्ना मीन्स दैट डिनोट्स or demonstrate two nouns, two persons. We'll learn two things about it. How to make musanna, number one. Number two, what is the i'rab of musanna? The i'rab of musanna is totally different than the i'rab of mufrad. Okay. So say for example, from kitabun, if you want to make two books, if you want to indicate two books, then we have to add alif and noon. With kitabun, it will become kitabani. Say for example, let me show you over here. This is kitabun. Now with kitabun, if we want to indicate two books, we want to say that we want to indicate or demonstrate two books, then we have to add alif and noon with kitab. It will become kitabani, right? Qalamun with alif lam, qalamani. Shajaratun plus alif noon, shajaratani. Likewise, zaharatun, alif noon, zaharatani. Right? So this is the way to make musanna from mufrad. What is the way? We have to add alif and noon with the mufrad, then it will convey the sense of two nouns, that is musanna. Okay. Now when it comes to i'rab, now we are going to learn about the i'rab of musanna as well. Now see. Now in mufrad you saw that the i'rab was either zammatain or zamma, fathatain or fatha, kasratain or kasra, but there is nothing like that in musanna. In first sentence, if we go to the first sentence, this is what the first sentence. This is marfu. At-talibani zakiyani. Now you can also have the sense that now this talibani, that indicates mudhakkar, not muannath. And when we talk about this over here, talibatani, this indicates muannath. Two muannath students are two female students and two male students. Like, so this is what the difference between muzakkar and muannas. Because I already told you that while constructing sentences, these rules will be implemented in a very well manner in letter and spirit. Now, to understand the i'rab of musanna, let me tell you, if the musanna is going to be marfu, then the i'rab will be alif noon, like at-talibani, zakiyani, alif noon. This is the marfu. It is marfu. Talibatani, at-talibatani, zakiyatani. Now you see, this is marfu. This is the status that is marfu with alif and noon. When we are going to convert into mansub or majroor in the sentence,
then alif will be changed into ya. This is the only thing you have to remember, that alif will be changed into ya, and before ya there will be fatha, like qabaltu talibaini, not beena. If there will be been, it will be something different. We are not talking about that until now. We are going to discuss it today as well. So alif is going to be converted into ya, and before ya there will be fatha. Qabaltu talibaini, qabaltu talibataini, right? And if there is means majroor, again like sallamtu ala talibaini, you see alif is converted, changed into ya, and there is fatha before alif, ya. Sallamtu ala talibataini. Any questions until now? Please let me know. We'll be having exercise as well, so you'll be doing on your own. No questions? Sir, can you repeat again the last? I will repeat in Urdu. Will that be okay for you? Yeah. Okay, I'm repeating in Urdu now. Okay. देखें जी, अब हम मुसन्ना पढ़ने जा रहे हैं, जिसको तस्निया भी कहा जाता है। अल मुसन्ना यानी इस्म, अल इस्मुल मुसन्ना व इराबुहु, यानी इसमें मुसन्ना ऐसा इस्म जो दो बंदे, दो चीजें, दो जगहों को इंडिकेट करे, उसको हम मुसन्ना कहते हैं। मैंने पहले बता दिया कि अरबी में मुफरद एक के लिए होता है, मुसन्ना दो के लिए, और जमा तीन और तीन से ज्यादा के लिए होता है। तो यहाँ मुसन्ना पढ़ रहे हैं। मुसन्ना पहले तो हम पढ़ेंगे कि मुफरद से मुसन्ना बनाने का तरीका क्या है, व्हाट इज द वे, तरीका क्या है। अब देखें, ये आपके सामने तरीका भी मौजूद है कि जैसे किताब है, किताबुन, इसके साथ हम ऐड कर लेंगे अलिफ नून, किताबानी, दो किताबें। कलमुन, उसके साथ ऐड कर दिया अलिफ नून कलमानी। शजरतुन, इसके साथ हमने अलिफ नून ऐड कर दिया शजरतानी। ज़हरतुन, इसके साथ अलिफ नून ऐड कर दिया ज़हरतानी। ये दो हो गया, ठीक है। अब देखें, इसी तरह ये यानी कि आप अभी एक्सरसाइजेज आएंगी, इस तरह आप दो बनाते जाएंगे, और आप यानी कि आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा बेहतर होते जाएंगे। अब इनके एराब की तब जब हम बात करते हैं, तो जो मुफरद होता है, मुफरद और मुसन्ना के एराब में बहुत ज्यादा फर्क है। मुफरद पे जम्मा और जम्मतैन आते हैं, फतह और फतहतैन आते हैं, कसरा और कसरतैन आते हैं। मगर यहाँ मुसन्ना के साथ वो बात नहीं है। मुसन्ना के साथ क्या होगा कि मुसन्ना के साथ अलिफ नून अगर आएगा तो वो रफ़ई हालत होगी, जैसे अत्तालिबानी ज़कियानी। अब ये इनकी जो है मरफू हालत है, अलिफ नून अत्तालिबानी ज़कियानी, अलिफ नून, ये रफ़ई हालत है। अत्तालिबतानी ज़कियतानी, ये मरफू हो गया। यानी अब जब ये मरफू होंगे तो अलिफ नून के साथ आएंगे, और जब इनकी हालत मंसूब और मजरूर होगी तो ये जो अलिफ आ रहा है ये या से तब्दील हो जाएगा। अलिफ या से तब्दील हो जाएगा, और या से पहले फतहा होगा। अलिफ या से तब्दील हो जाएगा और या से पहले फतहा होगा। ये दोनों एग्जाम्पल जो है 2 और 3 में आ रहा है, राइट। जैसे काबल तो तालिबैनी, अब ये अलिफ जो है या से तब्दील हो गया तो ये मंसूब हालत में हो गया, इसको हम नस्ब कहते हैं। यानी ये नस्बी हालत में है, और इस नस्बी हालत वाले को मंसूब कहा जाता है, और जरी हालत वाला को मजरूर कहा जाता है। तो यहाँ पर अलिफ नीचे वाले में भी या में तब्दील हो जाएगा, और इससे पहले फतहा होगा। जैसे काबल तो तालिबैनी, काबल तो तालिबतैनी, सल्लम तो अला तालिबैनी, सल्लम तो अला तालिबतैनी। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। अब हम चलते हैं आगे, और इसकी फिर जमा पढ़ते हैं। जमा के बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे जी। So brothers and sisters, now we are going to learn about plural form of noun or ism. That in plural form, how does it look like, and what are the types of plural form? First of all, al-jam'u
binu'ihi means jama and how it is made. These are means what are the ways to make it. Now, first of all, there are two types of jama: al jama al mukassar or jama al taksir. Both are same. Al mukassar or taksir. This is the same name. Means this is the name, two names given to same jama. And number two, al jama al salim. Now there are differences. Now, whenever we make jama mukassar or taksir from singular noun or singular ism, al ism al mufrad, then there is no way to make the plural from that. There's no any rule or no any methodology to make the plural. Like you can see the example over here, from rajulun to rijalun. There's no way. And this is what, let me tell you something else. This one is broken. Taksir means, or mukassar means broken. See, rajulun, rijalun. From rajulun, the rijal is jama, everybody knows. But how is it made? Nobody knows. There's no way to make it from the mufrad. So this is what jama mukassar or jama taksir, that is broken one. From baytun to buyutun, no way to make it. Just we know that the buyutun is the jama of baytun, right? Like kitabun is the mufrad and kutubun is jama. Now see, totally different is taksir. Likewise, and now in while making the jama, only harakat are changed. There's no rule to change the harakat, but we know that harakat is changed. Like in asadun, you see, there's fatha on hamza and fatha on sin. Asadun. While making the jama, it will be usudun. Means the fatha will be changed into a dhamma. Khashabun, khushubun. While means harakat is changed, this means it is changed from mufrad to jama. Saqfun, suqufun. Then another, third one. Like one harf is mahzuf. One harf is deleted from the jama. Rasulun is what? Singular. Rusulun is plural, jama. Now you see, waw is mahzuf. Kitabun, kutubun. Alif is mahzuf. And also harakat, definitely. Emadun, umudun, right? Then the fourth one, there is addition of a letter, like qalamun. Now that means to make it plural, aqlamun. Two letters have been added. Masjidun, masajidu, one letter. Aibun, uyubun, waw is added. So this is what jama taqsir. A jama taksir means broken one. We don't have proper rules to make plural from the singular. So this is why, that's why it is known as jama taksir. Moving forward. Then there is jama salim. Al jama salimu. Now jama salimu, there are two types of jama salim. Jama al mudhakkir salimu and jama al muannath salimu. Yani the jama that pertains to masculine gender, and salim that is not broken, that will be in proper form. And jama al muannath salim, yani the jama that pertains to feminine gender. How are they made? Let's do them, come to them. Now you see, there is a word muslimun. Now we have proper way to form jama from the mufrad. Muslimun is mufrad. While adding waw and noon, it will become muslimuna, and now that indicates more than two. Means that is not musanna, that is not mufrad, that is plural. You see that muslimun, with the addition of waw and noon, this becomes muslimuna, and muslimun is mudhakkar. If there is ta'i mudabbira, that will be muslimatun. Salihun plus waw noon, salihuna. Muhammadun plus waw noon, muhammaduna, right? So these words indicate more than two. Three or more than three. Muslimuna, three or more than three Muslims. Salihuna, three or more than three Salihun. Muhammadun, three or more than three people with the name of Muhammad.
So this is what the way to make or form Jama Muzakkar Salim from the Mufrad. Now if we come to Muannath Salim, what is the way? Like Muslimatun, then we have to add only alif and ta. Muslimatun plus alif ta, Muslimatun, Baqaratun plus alif ta, Baqaratun, Salihatun plus alif ta, Salihatun. Okay, so there is a proper way to form Jama Muzakkar Salim and Jama Muannas Salim. I'll go back to explain a bit in Urdu, all those who could not understand. So how can, yes, brothers and sisters, actually were learning about Al-Jama'u बिनौईही मीन्स जमा और इसको कैसे बनाया जाता है, उसका तरीका क्या होता है। देखिए जमा दो किस्म की अरबी में, एक होती है अल जमउल मुकस्सर, यानी जो टूटी हुई जमा, या उसको जमा तकसीर भी कहा जाता है। ठीक है, यानी जब वाहिद से जमा बनाते हैं तो जो जमा होती है वो टूटी हुई होती है, उसमें वाहिद का जो सीगा पूरा कंप्लीटली नहीं आता, इसलिए इसको कहते हैं मुकस्सर या जमा तकसीर। और एक जमा सालिम होती है जिसमें जमा में वाहिद का सीगा कंप्लीटली मौजूद होता है, वो टूटा हुआ नहीं होता। अब देखिए इसका कोई जमा तकसीर का बनाने का कोई तरीका नहीं है, इसकी यानी कि कोई तरतीब बरकरार नहीं रहती। जब वाहिद से जमा बनाया जाता है तो कोई तरतीब बरकरार नहीं रहती। जैसे रजुलन से रिजालुन, रजुलन मुफरद है, रिजालुन जमा है। आप देख रहे हैं कोई तरतीब यहाँ बीच में है नहीं। बैतुन से बुयूतुन, किताबुन से कुतुबुन। अब देखें मिसाल के तौर पर ये तीन एग्जाम्पल्स हमारे आ रही हैं। असदुन, अब देखें असदुन में हमजा और सीन जो है इस पे फतहा है, मगर इसकी जमा जब बनेगी तो उसुदुन हो जाएगा। असदुन, उसुदुन। खशबुन, खुशुबुन, खशबुन वाहिद है, खुशुबुन जमा है। सक़फुन, सुकुफुन, सुकुफुन जमा है। इसी तरह कोई हर्फ का इजाफा हो जाए, जैसे कि रसूलुन, हर्फ महजूफ हो जाए, हर्फ कम किया जाए, जैसे रसूलुन से रुसुलुन, किताबुन से कुतुबुन, इमादुन से उमूदुन। इसी तरह कोई हर्फ ऐड कर लें, जैसे कलमुन से अक़लामुन, मस्जिदुन से मसाजिदो, और आइबुन से अयूबुन। तो ये हो गई जमा तकसीर। फिर जमा सालिम, यानी जमा सालिम उसको कहते हैं जिसके जमा में मुफरद के हरूफ तरतीब बार उनकी तरतीब बरकरार रहे, वो वाक़ हों। और जमा जो सालिम है दो तरह की है, एक जमा अल मुज़क्किर सालिम और एक जमा अल मुअन्नस सालिम, दो जमा है। अब इनके बनाने का तरीका भी सामने है। फिर हम इराब की तरफ जाते हैं। देखिए मुस्लिमुन वाहिद है, इसके साथ हम जब ऐड कर लेंगे वाव नून तो ये मुस्लिमून बन जाएगी, और ये जमा हो गया, यानी दो से ज्यादा मुसलमान। सालिहुन से प्लस वाव नून, सालिहून दो से ज्यादा सालिह या नेक मर्द। मुहम्मदुन से प्लस वाव नून मिला दिया तो मुहम्मदुन दो से ज्यादा मुहम्मद नामी अशखास। और जमा मुअन्नस सालिम के साथ कैसे, जैसे मुस्लिमतुन, ये मुअन्नस वाहिद है, मुफरद है, अलिफ ताइड करेंगे तो मुस्लिमातुन, ये जमा मुअन्नस सालिम, क्योंकि वाहिद की तरतीब पूरी की पूरी इसमें बरकरार है। बकरतुन, बकरातुन, सालिहतुन, सालिहातुन, मुअल्लिमतुन, मुअल्लिमातुन, कलिमतुन, कलिमातुन। राइट, कोई सवाल? एवरीथिंग इज क्लियर? Okay, now we are going to learn Arabs, brothers and sisters. Please, I need your attention. This is very important because we don't have to confuse the Arab of Jama, Jama with the Muthanna. Now, Arabu Jama al-Mudhakkir Salim, what are the Arabs? Like al-Muallimuna Hadiruna. This is marfu. When it will be marfu, waw is the indication of marfu. Al-Muallimuna Hadiruna. Waw is the identification mark of marfu. If we want to change into mansub and majrur both, then this waw is to be changed into ya, like this, qabaltu al-muallimina, and before ya there will be kasra, like this one. Now there is difference, like if there will be two muallim, means say musanna in mansub and majrur, there will be muallimaini.
But there is jama, there will be muallimin. Means before ya there will be kasra in jama, in mansub and majroor. But in musanna there will be fatha before ya. Then it indicates two, like muallimaini two. But when we call it qabaltu muallimin, that is more than two. Sallamtu alal muallimina, more than two. If there is fatha before ya, like sallamtu alal muallimaini, then it will be musanna, indicating two. Is that clear? Okay, I hope that everything is clear. Okay, going to उर्दू में मैं आपको बता देता हूँ बेटा, सारे बहन भाई इसको सुन लें कि जब हम बात करते हैं जमा की, तो जमा का जो एराब की बात करते हैं और एराब भी सालिम का, यानी मुज़क्कर सालिम का, तो वाव जो आता है वाव वो इंडिकेट करता है कि मरफू है। जैसे अल मुअल्लिमून हाज़िरून, ये मरफू है। जब ये मनसूब और मजरूर होंगे तो वाव को या में तब्दील कर दिया जाएगा और या के पीछे या से पहले कसरा आ जाएगा। ये देखें, अल मुअल्लिमून हाज़िरून मरफू, क़ाबलतु मुअल्लिमीन, ओके, दिस इज व्हाट मनसूब, सल्लमतु अलल मुअल्लिमीन। अगर या से पहले फतह होगा तो वो मुसन्ना होगा, तस्निया होगा, और वो दो पे दलालत कर, जैसे क़ाबलतु मुअल्लिमैनी, सल्लमतु अलल मुअल्लिमैनी, ये मुसन्ना, मगर जमा होगा तो या से पहले कसरा होगा, क़ाबलतु मुअल्लिमीन, सल्लमतु अलल मुअल्लिमीन। क्लियर है ये सारी चीजें? ओके, let's do an exercise, then we'll do the remaining one inshallah. Yes, one by one, please raise your hands. One person will be completing this whole line. You have to make musanna from these nouns. आपने तस्निया बनाना है जी। कौन हैंड रेज करता है प्लीज? अस्सलाम वालेकुम जी प्लीज। फर्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है? यदुन। यस, यदुन। यदानी, बैतानी, जन्नतुन, जन्नतानी, कुम्मुन, कुम्मानी, रजुलुन, रजुलानी, जमील, जमीलानी। Yes, Sister Saima, second line. Right, okay. قريتان, سهلان, العاقلان, امرأتان, زوجان, عالمان. Very good. Yes, Sister Heba, go. तलमीज़ानी, जाहिरानी, तिलमिज़ानी, ये तल नहीं है, तिलमिज़ानी। तिलमीज़ानी, जाहिरानी, जारतानी, जाहतानी, अलकदमनी, अलकदमानी, अलिफ लाम आखिर में आएगा, अलकदमानी, तिफलानी, काज़िबानी, जाहिलानी, 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 अल, सही वर्ड क्या है? अल अज़ानी, ओज़ुनु, उज़ुन, अल उज़ानी, ओज़ुनानी, अल ओज़ुनानी। अल उज़ुनानी। जी सिस्टर मरियम, प्लीज गो अहेड। अल मरअतानी, अल ऐनतानी, अल ऐनानी, अल ऐनानी, साबानी, काबानी, काजिबानी, खस्मानी। वेरी गुड, शाबाश जी। जकरिया, गो अहेड। सर, अल कतिफानी, असफिहानी,
al-mu'minani sadiqani al-mirfuqani al-mu'allamatani al-muallimatani al-mu'allamatani। जी, इस दो भी कर लें आप। मैं सर हाँ, अल-मस्जिद से al-masjidani as-sa'idani। Okay, Sister Abdurrahman. Now the second exercise, you have to make Jama Muzakkar Salim. Go for first line completely. अस्सलाम वालेकुम। Wa alaikum salam. qaimuna Hmm. abiduna Hmm. shakiruna Hmm. sabiruna kafiruna। Okay, who else? Yes, Faraz, brother Faraz, go ahead. بسم الله. منافقون Hmm. خاشعون Hmm. ساجدون راكعون ذللون ضالون. ضالون. Okay. Yes, Sister Heba, do you want to do? मैं ट्राई करूँ। हाँ, मुमिनुन से मुकमिनून, जाखिलुन से जाखिलून, मुदर्रिसुन से मुदर्रिसून, मुसन्निफुन से मुसन्निफून, साइमुन से साइमून। ठीक है। Yes, Sister Saima, go ahead. Okay, مسافرون. Could you scroll it up? I can't see it. Okay, yes. Right, okay, so مسافرون, مهندسون, موظفون, محدثون, ممرضون. Very good, very good. Jazakallah. Okay, now before going to this, means doing this exercise, we'll go back and try to learn about how to make Jama Muannath As-Salim, right? Did we learn about that? Jama Muannath Salim? Completed that? I think they've completed, right? Okay. Yes, have. Alif ta join होएगा उसमें। Ah, very good, very good. Okay, the first line, who is going to do that? सिस्टर सादिक, आपने भी हाथ रेस किया था, अभी तक आप करना चाह रही हैं इसको? नहीं जी। हाँ, कर लें प्लीज। मरियम। मरियमुन। हाँ, मरियमुन। इसकी जमा क्या क्लियर बनेगी? नहीं है ये। जमा कैसे बनेगी? अलिफ ताम लाएंगे। अच्छा, कोई मसला नहीं। मरियमातुन। हाँ, मरियमातुन। हाँ, क़ानिततुन। क़ानितातुन। हाँ, क़ानितातुन। हाँ, वेरी गुड। ज़ाहिबातुन। यस, ये क्लियर नहीं है असल में ये। हाँ, ज़ाहिबातुन सही है। ज़ाहिबातुन। ज़ैनबातुन। वेरी गुड। मुमिनातुन। वेरी गुड। तालिबातुन। यस, क़ालिबातुन। तालिबातुन। Yes, Zubia. Go ahead. Swaimatun, Hmm. hafizatun, qaimatun, walidatun, जी वालिदातुन वालिदातुन। जी munafiqatun, murabbiyatun। Very good. जी, Mr. Brother Abdurrahman. Is this your first class? No sir। Okay, carry on. मुअल्लमातुन मुअल्लिमातुन। मुअल्लिमातुन। सॉरी वो क्लियर नहीं है वहाँ पे। कोई मसला नहीं। फातिमातुन तिलमिजातुन तय्यिबातुन
Zakiratun, Jalisatun. Very good. Ji Zakaria brother. Yes, sir. Sadiqatun, Raji'atun, Kafiratun, Kazibatun, Murzi'atun, Sabiratun. Very good. Ji Rabi Arshada sister. Go ahead. Hashi'atun, Mumarralatun, Aishatun, Mutabarrajatun, Mutahajjabatun, Mutasaddaqatun. Mutasaddiqatun. Okay. Very good, mashallah. So, can you translate them into Arabic? आप मुफ्रद बता दें तो शायद हम कर लें. You have got vocabulary of this. Let me show you the vocabulary that in the previous lessons you were having vocabulary that I gave you, and I have also gave you the complete vocabulary of the book. If you remember, the complete vocabulary of the book has been given to you. Now this is the vocabulary you see. Jaratun, Jaratun. Jaratun is plural. Jaratun padosan. Jalisatun betne wali. Jalisatun. Khashi'un, khashi'una. Khushu karne wala. Khasmun, harif. Hisamun. Dhakiratun. Dhikr karne wali. Aur jama dhakiratun. Just go through this. I'm just coming. A minute. What just happened? किसी ने भी vocabulary नहीं पढ़ी होगी मेरी तरह. अलग से. No. I think his phone rang. बिल्कुल सही कह रही हैं आप. Brother Faraz, how are you? याद नहीं किया. Alhamdulillah, I'm fine. Barakallah fiqh. How are you? I'm good. How's your classes going? Are you getting something? Understanding it? It's a bit difficult. Let me just say that there are too many words that I simply don't understand. But we're trying. And all those brothers and sisters, they are having an English book. That book also contains this complete vocabulary, right? Just you have to put your best efforts. You have to go through the vocabulary on regular basis. If we are going to end this session now, we'll join again for 10 to 15 minutes, inshallah, right? So this is dhakiratun, dhakiratun. Dhikr karne wali. Raji'atun, raji'atun, lutne wali. Raqi'un, raqi'una. So this is the vocabulary that we have, and we can complete the exercises after going through this vocabulary. Everything is over there. Nothing is missing. Okay? Now the first exercise, badhai, najjarun, jama najjaruna. मोची हज़्ज़ाउन हज़्ज़ाउना. तो ये आपके सामने सारी वोकैबुलरी है और प्लीज इसको गो थ्रू कीजिएगा अच्छे तरीके से और इंशाल्लाह हम थोड़ी देर में दोबारा क्लास में वापस आते हैं. आपको कोई सवाल हो तब तक कर लें.